देखो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि 2025 में डीए से करना चाहिए, बट इट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक क्योंकि बहुत सारे लोग करेंगे बिकॉज दे थिंक दैट द टॉप कंपनीज आस्क फॉर डीए से. But trust me, nowadays AI models or agents are so strong and they can do lot of things in coding. They can also generate new algorithms based on your thinking. It's just that you need to think the right prompt to put in your AI tool. But it doesn't mean that you don't have to learn the coding part. Of course, you have to write codes and you have to understand what's happening in the code so that you can do debugging. डिबगिंग स्किल्स कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास वो नहीं है सो देर इज़ नो पॉइंट. एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू सी योर एरर मैसेज, मोर देन बीइंग सैड दैट आपका कोड रन नहीं हो रहा है और प्रोडक्शन में फट गया, it's very important to understand why you are getting this error so that next time when you see the error you know why it is you are getting it. So आज के इस वीडियो में I got a AI tool for you which can do complete coding for you and bit scary also for the software developers. But trust me, it's not to replace the coders, it's to make their coding process faster. So without wasting any time, let's go to the video. Okay, simply मैं google.com में गया and I'll just use cursor.ai. इस वेबसाइट में गया and my operating system is Linux. If you have a Windows or a Mac also you can download this. I have already downloaded this very simple step. Linux में it's a bit complex to install the application, but इतना भी complex नहीं है. Obviously अगर आप application development वगैरह कर रहे हैं then you can do this very simply. तो ये डाउनलोड हो गया. डाउनलोड होने के बाद I'll just open the application simply. मैं यहाँ पे ओपन करो, आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो. ओपन करने के बाद यू विल नॉट सी दिस स्क्रीन, यू विल सी ऑप्शन टू साइन इन. व्हाट यू हैव टू डू इज साइन इन. आपको यहाँ पे जाके you have to sign in either using Google or if you have a GitHub account you can sign in using a GitHub account and simply sign in करने के बाद 15 से 20 दिन तक I'll have to check कितना दिन है. 15 से 20 दिन तक आप ये अकाउंट, आप ये एप्लीकेशन फ्रीली यूज़ कर सकते हो. बट इफ़ यू लुक एट द कर्सर एप्लीकेशन इट pretty much looks similar to हमारा if you have seen VS Code वैसा ही दिख रहा है. सो पहला एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ फोल्डर. सो मैं यहाँ पे मेरा प्रॉम्प्ट लिखूंगा एंड द बेस्ट थिंग इज हियर यू विल सी ऑल द ऑप्शंस टू राइट द एप्लीकेशन. जैसे आई विल आस्क दिस इज एजेंट, तो आई विल क्रिएट अ एजेंट, मे बी आई विल टेक वन एजेंट एज ऑप्शन एंड मैं यहाँ पे करूँगा बिल्ड. लेट मी ट्राई टू जूम इन दिस एप्लीकेशन अ लिटिल बिट. ओके, इतना काफ़ी है. ऑलराइट, यहाँ पे what I have to do is build one Chrome extension which can take note and save it in, let's say I would say /home. जैसे ये मेरा डायरेक्टरी है, आप जहाँ पे भी सेव करना चाहो. डेस्कटॉप लोकेशन. तो जैसे ही ये आप एंटर दबाओगे यू हैव टू जस्ट सिट बैक एंड टेक अ सिप ऑफ कॉफी. And you can see it's trying to generate all the files now and ये process है. It is also generating the file जैसे कि यहाँ पे है. Now it will ask you to either accept or reject or recreate the application. So इस केस में just have to read and understand the code and accept it. तो जैसे मैंने accept किया second application popup.html, ये भी accept कर लिया मैंने. अच्छा ही ठीक ही दे रहा होगा. Then it's creating a CSS file for the beautification of the application. So ये सब कुछ हमको एक्सेप्ट ही करना है इस टाइम पे. तो नाउ द css फाइल सब कुछ हो गया. नाउ इट सेज लेट्स क्रिएट अ popup.js. सो फ्रंट एंड के लिए popup.js यहाँ पे क्रिएट हो रहा है. देखो कितना सिंपल स्टेप है. जस्ट हैव टू सिट एंड रिलैक्स एंड सी द AI डेवलपिंग योर एप्लीकेशन, राइट? ओके,
finally there is a icon.48 jpg png what it have to create. Oh, this is also generating png. Purane version it was not there, but now it's already there, so which is a good thing. Now let it create a icon.png. We'll wait for that. And वैसे by the time it's creating, let me tell you, it's not the only application. जैसे कि आपके पास GitHub का Copilot option भी है, which you can integrate in VS Code, and Copilot also does the similar thing what it is doing right now. But the whole point is application development कितना आसान हो गया, you can understand. You know, the first time when I saw this application, I felt like मुझे सारे programming language पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. I just need to understand what the specific program is doing. तो आप आराम से यहाँ पे पढ़ के सिंपली समझ सकते हो. जैसे आई कैन अंडरस्टैंड इट गिव्स मी अ डाउनलोडिंग ऑप्शन एट द फाइल विद अ स्पेसिफिक नेम, एंड नेम यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, एंड इट इज सेविंग इट टू द डेस्कटॉप, राइट. सो एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज़ जनरेटिंग दैट आइकॉन फाइल. देखते हैं कैसा इमेज दिखा रहा है. सो इफ आई गो टू दिस फोल्डर, ओके, it's creating these icons now. Icon to load नहीं हो रहा है, but we'll see what it does. You see how quickly it has written all the codes, right? And यहाँ पे और भी options है. Like if you go to the model part, there are different options where you can change the model, like what model you want to use. यहाँ पे settings में आप जाओगे, then you go to the models. Here you have option which model you wanted to select. So for 15 days it is free. Not able to load the image, but ठीक है. Now it says open your Chrome, go to your extensions. Okay, now the application is created. I don't even have to save it. आप देख सकते हो पूरा application बन गया है. Now what you have to do is go to the extensions. So I'll go to the extensions, manage the extensions. Then I have to enable the developer mode. यहाँ पे I have just enabled load. And this is my application. I've just selected it, and आप देख सकते हो यहाँ पे application आ गया. So I'll just go here, and I can say I am able to save the note, and file name file.txt or notes.txt and save note. It says some error is coming. So what is that error? If you try to understand, anonymous function, what we did is now see how easier it is going to be to debug. So what I'll do, while saving the file, getting this error, let it fix the error now. Now it's trying to analyze कहाँ पे error option हो सकता है. So it's regenerating the popup.js. If you go here, okay, now we have an updated one, and I need to accept it. Okay, now save option is true. Okay, now let's reload the application. Okay, sometime Chrome goes crazy, so you have to reload. Select that. Okay, have all the details. यहाँ पे जाना है, plugin करना है. Here is my note 2 and file.txt. Save note. Okay, note saved successfully. If I go to my desktop, I can save the note. तो यहाँ पे बहुत easily note मेरे save हो गए. You can see here is my note. Right, so it is that easy to develop one application nowadays. But एक चीज आपको take care करना है, because the application is going to change so rapidly. You make sure that you initiated local Git and do a version control, and use AI to do rest of the works. So I think you understand the whole concept, how easy the application development is going to be very soon. And I have seen people literally developing operating systems, embedding operating systems using this cursor application
or similar kind of application. So nowadays we have to get used to such application to develop faster. And जो लोग बोलते हैं AI जॉब सारा खा जाएगा, इट्स नॉट ट्रू. AI जॉब काम करने का जो टाइम है उसको बहुत कम कर लेगा. I hope you like this video and you learned something new today. If yes, then do subscribe to my channel. Thank you so much for watching.